हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम कल की वीडियो को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ यूनिट 2 के बारे में, यूनिट 5 चल रहा है, सॉरी। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सम स्पेसिफाइड गुड्स में बी रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड अंडर अदर लॉ सच एज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, इंडियन ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, आर्म्स एक्ट एक्सेट्रा। प्रोहिबिशन अंडर दोज एक्ट विल ऑल्सो अप्लाई टू द पेनल प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट। उसके बाद देखिए, एनी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ बीइंग अननोइंगली कंसर्न्ड इन एनी फ्रॉडुलेंट इन्वेशन और अटेम्प्टेड इन्वेशन ऑफ एनी प्रोहिबिशन अंडर द customs act or any other law for the time being in force in respect to any import or export of goods, shall be liable to punishment with imprisonment for minimum term of 3 years, 7 years in respect of notified goods under section 135 of the customs act. उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, keeping in view the above penal provisions in the customs act to deal with any deliberate invasion or prohibition or restriction of import or of exports of specialized goods, it is advisable for the trade to be well conversant with the provisions of exim policy and export policy and the customs act as well as other allied acts. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए इनको, सारे के सारे क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे नोट्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, लेकिन फ्री नहीं है, आपको पे करके लेना होगा। अगर फ्री चाहिए तो देख के सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज नोटिफाइड गुड्स अंडर कस्टम्स एक्ट। नोटिफाइड गुड मीन्स गुड्स स्पेसिफाइड इन द कस्टम नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 11B, सेक्शन 11B। उसके बाद देखिए, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स। एग्जांपल्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स आर कॉफी, रबर, कार्डमन, उसके बाद पेपर, एक्रोनट अदर देन टेंडर, एक्रेक नट एंड कैश्यू नट, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, टिम्बर, प्लाईवुड, ग्लास, थ्रेड, बटर, रबर एंड एनी अदर गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मीन्स गुड्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 11(1) in relation to a specified area. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, mention the provisions of customs act regarding notified goods. Following are the provisions of customs act regarding notified goods. पहला देखिए, section 11C, persons possessing notified goods to intimate the place of storage etc. Every person who owns, possesses or controls on the notified date any notified goods shall within 7 days from the date delivered to the proper office a statement in such form, in such manner and containing such particulars as may be specified by rules made in this behalf in relation to the notified goods owned, possessed or controlled by him and the place where such goods are kept or stored. Number 2 देखिए, every person who acquires, after the notified date, any notified goods, shall before making such acquisition, delivers to the proper officer an intimation containing the particulars of the place where such goods are proposed to be kept or stored after such acquisition, and shall immediately on such acquisition, deliver to the proper officer a statement in such form, in such a manner and containing such particulars as may be specified by rules made in his behalf in relation to the notified goods acquired by him. तीसरा देखिए, if any person intends to shift any notified goods to any other place than the intimated place, then shall, before taking out such goods from the intimated place, delivers to the proper officer an intimation containing the particulars of the place to which such goods are proposed to be shifted. Full stop. No other person shall, after the expiry of 7 days from the notified date, keep or store any notified goods at any place other than the intimated place. Where any notified goods have been sold or transferred, such goods shall not be taken from one place to another unless they are accompanied by the voucher referred to in section 11F. And last देखिए, section 6, no notified goods other than those which have been sold or transferred shall be taken from one place to another unless they are accompanied by a transport voucher in such form and containing such particulars as may be specified by the rules made in this behalf prepared by the persons owning, possessing or controlling such goods. तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में हम बाकी पोर्शन को कवर करेंगे आंसर का, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, या आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।